हेलो एवरीवन वेलकम बैक। आज हमारे पास जो टॉपिक है दिस इज द लेक्चर सेकंड ऑफ दिस सीरीज व्हिच आई हैव स्टार्टेड। इन दिस सीरीज आई विल कंप्लीट ऑल योर एनसीईआरटीज सिक्स्थ से लेकर 12th तक एंड आई एम श्योर कि लाइक गारंटी मैं आपको दूंगा कि आपको एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी आफ्टर वाचिंग ऑल दीज लेक्चर्स। सो इन दिस लेक्चर 2 today we will discuss some things like what are the different types of definitions और ये जितने भी यहाँ पे हमारे थिंकर्स हैं इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बोला है कि इनकी नज़र में इकोनॉमिक्स में क्या है। सो ऐसे समझ लीजिए कि एडम स्मिथ ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेल्थ, सो वी कॉल इट वेल्थ डेफिनेशन। Alfred Marshall says that it is all about the welfare and not the wealth. And Lionel Robinson बोलता है कि economics is all which deals about scarcity. Scarcity means, remember the word, it means limitations. Limitations. हर एक डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली द पॉल सैमुअलसन, मिस्टर पॉल सैमुअलसन ने बोला दैट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द ग्रोथ। ऑलराइट, ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। सो फर्स्ट एडम स्मिथ, ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ही सेज दैट इकोनॉमिक्स जो है it is all about wealth. His definition says that he had written a book, an inquiry into the nature and causes of wealth of nations in 1776 में इसने ये बुक लिखी थी। एंड इस बुक में इसने बोला था दैट जितने भी नेशंस होते हैं उनके पास जितनी भी वेल्थ होती है उन नेशंस को, उसका नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेल्थ, कि इज इट ऑल नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज or whatever the level, and what are the causes of that wealth. And he says that economics is the science of wealth. You have to remember the word economics is the science of wealth. ये ये एडम स्मिथ बोलता है that economics is all about wealth. And when he says that it is about wealth, that means according to him जो economics है, economics को फोकस करना चाहिए तीन चीजों पे। एक, how a nation produces wealth, how it distributes wealth, and how it consumes wealth. All right? Okay. So, give me a minute. चलिए, एडम स्मिथ क्या बोलता है? एडम स्मिथ says that according to him, economics जो है, it's all about wealth, wealth of a nation. एक नेशन के पास ये वेल्थ कैसे आता है, सोर्स क्या है इस वेल्थ का, नेचर क्या है इस वेल्थ का, ये जो दौलत है किसी भी कंट्री में इसका नेचर क्या है। से फॉर एग्जांपल, इज इट ऑल कमिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, इज इट ऑल मैन मेड रिसोर्सेज, ओके, इज इट से फॉर एग्जांपल ऑल अबाउट industries, the wealth that comes from industry, is it coming from services? All right. So according to him, economics is all about the wealth, and he says that since it is all about wealth, and each country has to focus on this thing, that is, the economies should focus on how a country, how a nation produces wealth, how a country distributes wealth, and how a country consumes this wealth. So आपने देखा होगा या आपको शायद पता नहीं होगा, there are three problems of an economy: what to produce, how to produce, and for whom to produce. उसका जो रूट है वो इसी डेफिनेशन से आया हुआ है। खैर, आगे चलते हैं फिर। इसमें हमें एक प्रॉब्लम दिखती है, दैट इज दैट अकॉर्डिंग टू सिम, he says that जो लोग हैं they go to produce goods and services, they go for production, and this production generates wealth, and wealth improves national welfare. So what does he say? Smith says that जो wealth है ये कहाँ से आती है? He says that ये आती है production of goods and services. Remember,
इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में किसी भी इकोनॉमी में पहले ये समझ लेते हैं, इकोनॉमी का फंक्शन जो है that is production of goods and services, and he says that if you produce goods and services, it will generate wealth. It will generate wealth, and according to him, this wealth can be used for national welfare. नेशनल वेलफेयर, आपको हॉस्पिटल बनाने हैं, आपको रोड्स बनाने हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, दिस कैन बी ओनली इफ यू हैव द वेल्थ, एंड ये वेल्थ तभी आएगी व्हेन यू विल गो फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट जनरेट्स वेल्थ। ऑलराइट, ओके। नाउ एडम स्मिथ ने एक कॉन्सेप्ट दिया है दैट इज नोन एज इनविजिबल हैंड। द concept इज नोन एज इनविजिबल हैंड। नाउ व्हाट इज दिस concept ऑफ इनविजिबल हैंड? एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे आप समझ लीजिए। व्हाट इज एडम स्मिथ्स इनविजिबल हैंड? सी, according to Adam Smith, he says that society is run by society is run by an invisible hand. An invisible hand. I will keep it like this. Invisible hand. Now, according to him, what is this invisible hand? Say, for example, there is a farmer, और according to Adam Smith, हर एक इंसान अपना इंटरेस्ट परस्यू करने में लगता है, कि हर एक इंसान को सिर्फ अपनी ही जो इंटरेस्ट हैं, अपने ही गोल्स हैं, वो फुलफिल करने में लगा है। एंड एक फार्मर को अपना इंटरेस्ट है टू प्रोड्यूस, कल्टीवेशन करना। से फॉर एग्जांपल ही कल्टीवेट्स राइस, एंड अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ दिस फार्मर हैज नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड, कि दुनिया क्या कर रहा है। इसका काम है प्रोडक्शन ऑफ द राइस, एंड ही प्रोड्यूसेस राइस फॉर हिमसेल्फ ओनली। एंड दिस फार्मर invisibly invisibly and unintentionally produces the goods, जो यहाँ पे राइस है, unintentionally produces the rice for the society, क्योंकि ये हर एक चीज जो ये प्रोड्यूस करेगा राइस, ये अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि for that he will sell this rice to another person for money। समझ आ रहा है? सो एनी पर्सन, ऑल द पर्सन इन एन इकोनॉमी, वो अपना इंटरेस्ट फुलफिल करने में लगे हैं, एंड अनइंटेंशनली दे आर ट्राइंग टू हेल्प। से फॉर एग्जांपल इफ आई एम ए टीचर, माय ओनली जॉब इज टू टीच, एंड इसी टीचिंग के दौरान आई गेट मनी। समझ आ रहा है? सो आई एम ट्राइंग टू फुलफिल माई गोल्स, एंड व्हेन आई फुलफिल माई गोल्स, आई kind of unintentionally help you people to prepare for this exam। Okay, this is the concept of invisible hand। Okay, so let's see, society is run by an invisible hand। That means, इसका मतलब क्या हो गया, कि individuals freely pursue their own self interest, और बदले में they unintentionally benefit the society as a whole। जैसे ये एग्जांपल मैंने, a farmer wants to earn profits, so he grows fresh and quality vegetables, customers buy them, customer उनको खरीदते हैं because they are good and cheap। Farmer self interest, so farmer का self interest क्या है, पैसा कमाना। It ultimately helps society to get a better food। समझ रहा? Here society does not grow food, it is the farmer who grows the food, it is the tailor who makes those clothes, it is a factory that makes the shoes। सब अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, एंड अनइंटेंशनली वो दूसरों की हेल्प करते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड। ऑलराइट, बट एडम स्मिथ का एक प्रॉब्लम है, लेट्स सी कि इसकी डेफिनेशन में प्रॉब्लम क्या है। ही सेज दैट wealth is everything। According to Adam Smith, wealth is an end, end means goal। According to him, wealth is everything, but this is problem, it does not, according to him, his theory does not focus on human welfare, he does not talk about the human welfare, he does not talk about the environment,
कि इन परस्यूइंग ऑफ वेल्थ आप अपने इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। ही डज नॉट टॉक अबाउट दिस, ही डज नॉट टॉक अबाउट हैप्पीनेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वेल्थ की बात करते हैं, इंडिया का जीडीपी जो है इट इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बहुत बड़ा जीडीपी है हमारा, अराउंड टचिंग $4 ट्रिलियन। बट हाउ अबाउट आवर लेवल ऑफ हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इंडेक्स पे हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। ओके, अगेन, इफ यू हैव द वेल्थ, इट इज नॉट अ गारंटी ऑफ हैप्पीनेस, इट इज नॉट द गारंटी आपका एनवायरनमेंट ठीक हो। देयर इज नो गारंटी, बिकॉज देयर इज नो गारंटी दैट दिस wealth will lead to human welfare. So this is the problem, this is the criticism of this theory. All right, चलिए थोड़ा सा इसको अब हम करते हैं क्विक रिवीजन. What does he say? First, according to Adam Smith, Smith says that economics is the theory that deals with generation of wealth. ये याद रहा आपने? ओके, बट इसमें ये इशू है that this wealth does not lead to human welfare always. Human welfare की बात उसने नहीं की. Second, he did not talk about the environmental damage. जो आप वेल्थ को परस्यू करते हैं, यू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, उससे इन्वायरमेंट पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है. ऑल राइट, ओके, द लेवल ऑफ हैप्पीनेस इज नॉट मेजर्ड, कि आप वेल्थ को परस्यू कर रहे हैं, वेल्थ आपका गोल है. एंड हाउ अबाउट द लेवल ऑफ happiness? Does it make you really happy? Does having all money make you always happy? Not always. Okay, and he gave one concept of invisible hand. Invisible hand. So invisible hand simply means people they pursue their own goals. ये अपना काम करेगा, and unintentionally he will help the society. ठीक है? This is the invisible hand. All right. चलिए, another definition of economics is given by Alfred Marshall, and Alfred Marshall, according to him, he says that economics is not the only science of wealth, it is the science of human welfare. So Alfred Marshall ने एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा चेंज किया है, बिकॉज ही टॉक्ड अबाउट साइंस ऑफ वेल्थ. ही सेज दैट इट इज द साइंस ऑफ ह्यूमन welfare. He wrote a book, The Principles of Economics, in 1890, and says that economics is the study of mankind in the ordinary business of life. So according to Alfred Marshall, ये देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, wealth is a tool. Well, it is a tool to achieve the ultimate goal. And according to the Alfred Marshall, जिंदगी में अल्टीमेट गोल है ह्यूमन हैप्पीनेस एंड लोगों का वेलफेयर. आपको समझ आई बात? देखिए, यहाँ पे आपको ये देखना जरूरी है कि जो एडम स्मिथ है, he says that the goal is to earn more wealth, the goal is to generate more wealth. And जो एल्फर्ड मार्शल है, he says that it is okay if you have wealth, but this wealth is a tool to achieve human welfare. To achieve human welfare. He says that it's okay to generate wealth, good, but use this wealth to achieve human welfare. Example, if you have more GDP, use this more GDP to reduce poverty. Use this more GDP to generate more tax. You increase the tax and you spend that tax on poor people. Develop infrastructure. ठीक है? Use this more GDP to develop schools, hospitals, roads. आपको समझ आ रहा है? So he is the person that made a shift in economics from wealth to human welfare. All right. Now, what is the criticism of this welfare definition?
The criticism goes like that. He says that only wealth, जो material things हैं, do not promote human welfare. देखिए, he says that अगर आपको ह्यूमन वेलफेयर चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होगा? बाय जनरेटिंग मोर वेल्थ. एग्जाम्पल है, मटेरियल थिंग्स होते हैं वो विच हैव द इकोनॉमिक वैल्यू, जिनके लिए आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा. से फॉर लिक्वर एंड सिगरेट्स, बोथ आर मटेरियल थिंग्स, बट डू दे रियली जनरेट promote human welfare? Not. So ये डेफिनेशन इग्नोर करती है उन चीजों को, लाइक विच आर इमेटीरियल, जिनके लिए आपको कभी पैसा पे नहीं करना पड़ता. लाइक यू वांट टू गो एंड लिसन म्यूजिक, फ्रेश एयर, यू वांट टू हैव अ वॉक, उससे भी ह्यूमन वेलफेयर प्रमोट होता है. बट दिस डेफिनेशन डज नॉट कवर दैट. ठीक है. एंड वेलफेयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन. पर्सन ए के लिए वेलफेयर मे बी एक जॉब हो सकता है, लेकिन पर्सन बी के लिए वेलफेयर जॉब नहीं है. उसके पास ऑलरेडी जॉब है, बट मे बी उसके लिए हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट. ही इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज. सो उसके लिए वेलफेयर तब होगा अगर उसका डायबिटीज कंट्रोल में हो जाएगा. सो याद रखेंगे, ही सेज दैट कि वेलफेयर अचीव करने के लिए सिर्फ वेल्थ चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है. वेल्थ के बगैर भी वेलफेयर हो सकता है. यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स. ये आपके मेंस में काम आ जाएंगे. कैसे वेलफेयर? इफ यू लिसन टू सम गुड म्यूजिक, इफ यू लिव इन एन area where the environment is very great, there is less pollution, उससे भी वेलफेयर जनरेट हो सकता है. ओके, कॉर्डियल रिलेशंस रखना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, उससे भी वेलफेयर हो सकता है. ठीक है. सोसाइटी में एक अच्छा माहौल रखना, सोशल हार्मनी से भी वेलफेयर जनरेट होता है. बट अकॉर्डिंग टू देम, दे डू नॉट प्रमोट वेलफेयर बिकॉज दे आर इमेटीरियल थिंग्स, जो कि गलत है. ठीक है. चलिए, एक डेफिनेशन है. इट वाज गिवन बाय दिस पर्सन नेम एज रॉबिन्स, लेनल रॉबिन्स, and he says that this definition is known as scarcity definition. Now, he wrote a book, Significance of Economic Science, in 1932. Now, according to him, economics जो है, it is a science which studies human behavior and its relationship between ends and scarce means which have alternate uses. This is the definition generally जो हम लेते हैं जब भी हमें इकोनॉमिक्स की पहली क्लास होती है किसी भी क्लास में, तो हम यही डेफिनेशन जनरली लेते हैं. तो सिंपली मैं आपको ये बताऊंगा ये डेफिनेशन क्या बोलती है. इकोनॉमिक्स जो है, it deals with two things according to him: wants and resources. पहले लेक्चर में मैंने बोला है कि resources are scarce, that means they are always limited. All right. And जो wants हैं, they are always unlimited. ठीक है. So economics according to him says that, according to Lionel Robbins, इकोनॉमिक्स वो चीज है जो हमें ये सिखाती है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हाउ वी कैन अचीव अनलिमिटेड वाट, जो भी एक्चुअली नॉट पॉसिबल है. यू हैव टू गिव प्रायोरिटी, यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू योर वांट्स so that you achieve maximum satisfaction. आप अपनी वांट्स को फुलफिल करेंगे. यूज these resources which are limited, which are also known as scarce, so that you achieve the maximum satisfaction. This is the economics according to the Robbins. So Robbins क्या बोलता है? That it is the science which deals with the human behavior. यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमें ये देखना है how do humans behave. How do humans behave when they have unlimited wants and their resources are limited? And in these two things, how do they behave? This is the concept of economics. मैंने आपको लेक्चर वन में एग्जांपल दी थी. फॉर दिस इज अ पर्सन मिस्टर ए. अगर मिस्टर ए की इनकम है 5,000, this is his resource which are limited in nature, and his expenditure is, say for example, 7,000. आपको समझ आ रहा है? And beyond 7,000 his expenditure can be more. So how does he behave when his income is limited and his expenditure, which here means
Your wants are always unlimited. How do you behave? How humans behave? Okay, you want to. I'll give you more example. Your budget is, say, for example, 10,000 rupees. Would you like to have an iPhone? Would you want to have iPhone? Maybe some another Chinese company phone जो आपके बजट में आ जाएगा. Maybe Samsung. कुछ मॉडल्स हैं जो 10,000 में भी आते हैं. So this is how you deal. Your budget is limited, but your actually want is like this. iPhone, you want to have an iPhone. समझा? And how do you behave in this thing is the scarcity definition. All right. Okay. Now, last definition is the growth definition. It was given by Paul Samuelson. एंड सी अगर आप देखेंगे इन चार इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमी को डिफाइन किया अपनी नजरिए से. सो अकॉर्डिंग टू द सैमुअलसन, it says that economics is all about how a country should increase its capacity to produce goods and services, जिसको हम बोलते हैं GDP, over a period of time. This is the growth definition. So growth means the ability of an economy to produce goods and services over a period of time, also known as GDP. Very simple. Now look here. Samuelson क्या बोलता है? He says that Samuelson says that economics is about growth. इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है इट इज ऑल अबाउट ग्रोथ. सो एक बात याद रखेंगे, तो ग्रोथ जो है इकोनॉमिक्स में इसका मतलब होता है इंक्रीज इन जीडीपी. दैट मीन्स अभी जीडीपी का मतलब जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आगे हम पढ़ेंगे. सिंपल याद रखेंगे, इफ यू आर एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, अगर एक कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनाती है, से फॉर एग्जांपल एक कंट्री में हमने फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली ये एक कंट्री है, ठीक है. ओके, यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं. 2025 में हमने यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जिनकी वैल्यू है से फॉर एग्जांपल 1,000 रुपीज. 2026 में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने बनाए उनकी वैल्यू है 1,300. 2027 में 1,500. Goods and services are increasing here. This is the concept of growth. So याद रखेंगे, ग्रोथ सिंपली मीन्स एन इंक्रीज इन जीडीपी. यहां तक समझ आ रहा है? और ये बोलता है कि ये जीडीपी कैसे इंक्रीज होगा? यू विल हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ पीपल. यू विल हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ पीपल एंड द इकोनॉमी एज होल. देखिए, जीडीपी बढ़ता है, कैसे बढ़ेगा? देखिए, जीडीपी का मतलब ग्रोथ. ये कैसे बढ़ेगा? पहला, एजुकेशन से. The more you are educated, the more contribution you will make. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से, ठीक है. ओके, अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका एक्सट्रैक्शन प्रॉपर तरीके से करना, एक्सट्रैक्शन कर लेना प्रॉपर तरीके से, ठीक है. ओके, और कैसे होगा? विमेन एम्पावरमेंट. विमेन एम्पावरमेंट, you allow more women to work, ठीक है, you allow them to take the decisions. Okay, social harmony, it is important. So these are different methods जिससे आप अपना जीडीपी बढ़ा सकते हैं. So according to him, if you focus on education, technology, resource development, all these things, it will be it will help any country to increase its जीडीपी, जिसका मतलब होता है ग्रोथ. ठीक है. इंक्रीज इन जीडीपी मींस ग्रोथ, और ग्रोथ को कैसे आप इंक्रीज करोगे? जब आप अपनी इन कैपेसिटीज पे फोकस करेंगे. ऑल राइट. ओके, सो थैंक यू. आज इतना ही. आई एम ट्राइंग टू कीप दीज टॉपिक्स वेरी सिंपल, एंड यू प्लीज कीप फॉलोइंग, क्योंकि आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं. एंड थोड़ा सा मैं आपको ना एक ओवरव्यू ही दूंगा इन चीजों का. चलिए,
सो वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। सो वेल्थ डेफिनेशन में बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेल्थ, हाउ ए नेशन जनरेट्स वेल्थ। और एडम स्मिथ ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इनविजिबल हैंड, कि हाउ पीपल एक्चुअली एक दूसरे की मदद करते हैं अनइंटेंशनली। देखिए मुझे यूट्यूब ये यूट्यूब खोला है मैंने, ठीक है, मैं खुद की मदद कर रहा हूँ और अनइंटेंशनली मैं आपकी भी मदद कर रहा हूँ। ओके, सो एल्फ्रेड मार्शल ने क्या डेफिनेशन दिया था? इट इज ऑल अबाउट welfare definition. He gave the concept of welfare definition. Robbins ने बोला that economics is all about scarcity. Resources are always limited, and it is the scarcity of the goods and services. आपको समझ आ रहा है? एंड व्हेन देयर इज स्कैरिसिटी, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आपको वेदर ऑप्शन ए चूज करना है या ऑप्शन बी। सैमुअलसन ने क्या बोला था? दैट इट इज ऑल अबाउट ग्रोथ। ही गिव द ग्रोथ डेफिनेशन। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज बताइए कि इफ आई नीड टू इम्प्रूव मोर एंड वेयर आई नीड टू इम्प्रूव, अगर आपको, एंड प्लीज डू शेयर इट एक्चुअली। ठीक है, थैंक यू सो मच।